So today we are going to talk about midbrain. It is also called mesencephalon. Mesencephalon or midbrain. Mesencephalon or midbrain, it is present below the diencephalon, and above pons varoli. It is present below the diencephalon and above the pons varoli, midbrain. Means this is cerebral hemisphere. These are cerebral hemispheres, cerebrum, deep median fissure, central sulcus, lateral or parieto-occipital sulcus, corpus callosum, so this is cerebrum. Here is the diencephalon. This is diencephalon. So midbrain is present below the diencephalon. So this is midbrain. This is midbrain, and above the midbrain diencephalon is present. Above the midbrain, this is diencephalon. Okay, so this is diencephalon. So midbrain is present below the diencephalon and above the pons varoli. Here is the pons varoli. So here it is pons. Pons is the part of forebrain. Pons is the part of hindbrain. Sorry, it is a part of hindbrain. This is pons varoli. And here cerebrum is present. Cerebellum. This is cerebellum. So this is cerebellum. Midbrain is present above the pons varoli and below the diencephalon. Means midbrain is present between diencephalon and pons varoli. So it is a short small part of brain which connect hindbrain with forebrain. Midbrain consists of parts. So this is the posterior part of midbrain. It is tectum. So this is tectum. Posterior part of midbrain is tectum. So this is dorsal side of midbrain, and this is ventral side of midbrain. This is the ventral side. This is ventral side.
So this is a duct, narrow duct, that is iter. This is iter, dorsal side of midbrain, and this is ventral side of midbrain. So posterior part or posterior portion of midbrain is called tectum. It is called tectum. Posterior part of midbrain is called tectum, and on the dorsal side of midbrain there is pair of two optic lobes. These two optic lobes divide transversely. Two optic lobes divide transversely. Actually, this is pair of two optic lobes, but this pair divide transversely. So when this pair divides transversely, there is a formation of four lobes, and these four lobes are called corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina. Isn't it? Is it clear? So posterior part of midbrain is called tectum. On the dorsal side of midbrain, on the dorsal surface of midbrain, there is a pair of optic lobes. Optic lobes divide transversely. Optic lobes divide transversely to form four rounded bodies. That four rounded bodies are called corpora quadrigemina. That four rounded bodies are called corpora quadrigemina. So in this way, midbrain consists of number 1 corpora quadrigemina, and another part of midbrain is cerebral peduncle. Isn't it? Cerebral peduncle. So this is tectum. Then these are corpora quadrigemina. Quadra means four. Corpora quadrigemina, that is four rounded bodies present on the dorsal surface of midbrain, are called corpora quadrigemina, and this is cerebral peduncle. Cerebral peduncle is two bands. Cerebral peduncle is two bands of longitudinal fibers. This is one band and this is another band. These two bands of longitudinal fibers is called cerebral peduncles. And this is tegmentum. And this is crura cerebri. Out of two longitudinal bands of cerebral peduncle, one is called tegmentum and another is called crura cerebri. Tegmentum
and crura cerebri. So these longitudinal bands contain ascending and descending track, ascending and descending tracks, which conduct impulses to and from the cerebrum. To and from the cerebrum. Ascending track conduct impulses to cerebrum, and descending track conduct impulses from cerebrum. Any difficulty? So tegmentum, actually this is the ventral side of midbrain. Ventral side of midbrain consists of cerebral peduncle, and dorsal surface or posterior surface is called tectum, and dorsal surface has 4 rounded bodies called corpora quadrigemina. We will discuss the function of corpora quadrigemina sometime later. Cerebral peduncle consists of two bands of longitudinal fibers, and these two bands collectively called cerebral peduncle. But out of these two bands, so this band, which is actually this is the ventral side, but the band of fibers towards the dorsal side is tegmentum, and band of fibers towards most ventral side is crura cerebri. It's crura cerebri. So this is iter. Iter is a narrow duct. It is also called cerebral aqueduct. Iter is a narrow duct which passing through midbrain and which connect third ventricle of diencephalon with fourth ventricle of medulla oblongata. And iter is present between tegmentum and tectum. Iter is present between tegmentum and tectum. One terminology is there, and that is red nucleus. Red nucleus. Red nucleus, it is a mass of grey matter surrounded by white matter present in the tegmentum. Mass of grey matter found in the white matter present in the tegmentum is red nucleus. So red nuclei or red nucleus, that is the mass of grey matter, means these are the cell bodies which are surrounded by white matter, and where red nucleus is found in the tegmentum. So this is red nucleus. So it appears red because these are richly supplied with blood vessels as well as contain iron. It contains large amount of iron and it is richly supplied with blood vessels, and due to this it appears red in color, and hence it is called red nucleus. Red nucleus found in the tegmentum, and red nucleus is nothing but a masses of grey matter surrounded by white matter, and iron as well as rich supply of blood vessels give red appearance to this grey matter, Function of red nucleus. Function of red nucleus is coordination between muscle movement. Coordination between muscle movement. So red nucleus, with the help of cerebellum, red nucleus coordinated with cerebellum regulate or maintain coordination between muscle movement. Any difficulty? Coordination of muscle movement. Okay. Then
Carpora quadrigemina. Carpora quadrigemina consists of 4 rounded bodies, and out of these 4 rounded bodies, upper 2 Carpora quadrigemina, 4 rounded bodies. These are 2, and so out of these 4 rounded bodies, upper 2 are called superior and lower 2 are called inferior. Superior and inferior. Superior rounded bodies are large in size as compared to inferior rounded bodies. Superior rounded bodies are superior colliculi, and inferior rounded bodies are inferior colliculi. These are 4 rounded bodies. These 4 rounded bodies collectively called Carpora quadrigemina. Out of these 4 rounded bodies, upper 2 are called superior colliculi and lower 2 are called inferior colliculi. Function of superior colliculi and function of inferior colliculi. Function of superior colliculi. Coordinate movement of head and neck. What is the function of inferior colliculi? Same. Coordinate movement of head and neck. Function of superior colliculi is coordinate movement of head and neck in response to with response to function of inferior colliculi, coordinate movement of head and neck with respect of in response to visual reflexes with respect to auditory reflexes. Superior colliculi coordinate movement of head and neck in response to visual reflexes, and inferior colliculi coordinate movement of head and neck with respect to or in response to auditory reflexes. Means superior colliculi involved in vision and inferior colliculi involved in hearing. Any difficulty? So we have completed midbrain. So I want to revise things. Midbrain ये डायनसेफेलॉन एंड पॉन्स वैरुली के बीच में होता है ब्रेन का हिस्सा. मिड ब्रेन इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय सेरेब्रम. मिड ब्रेन जो है सेरेब्रम से कम्प्लीटली कवर्ड है. मिड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज ए टेक्टम, उसे टेक्टम बोला जाता है. मिड ब्रेन का अगर हम डॉर्सल सरफेस देखेंगे तो हमें वहाँ 4 राउंडेड बॉडीज़ नज़र आती है एंड दैट 4 राउंडेड बॉडीज़ आर कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना.
उसमें से जो अपर वाली राउंडेड बॉडीज़ है उसे बोलेंगे सुपेरियर कॉलिकुलाई, वो थोड़ी लार्ज साइज़ है। लोअर राउंडेड बॉडीज़ उसे बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिकुलाई, साइज़ छोटा है थोड़ा सा। सुपेरियर कॉलिकुलाई का फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल रिफ्लेक्स। एंड इन्फीरियर कॉलिकुलाई का फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी रिफ्लेक्स है। जैसे हम चल रहे हैं, हमें किसी ने आवाज़ दिया तो हम ऐसे पीछे मुड़ के देखते, या फिर हमने कुछ ऐसा देख लिया तो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है ना, जैसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ देखने के बाद जब हम रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं, जैसे ऐसी कुछ अचानक बॉडी की मूवमेंट होती है ना, तो वो कौन कंट्रोल करता है? सुपीरियर कॉलिकुलाई। लेकिन साउंड जब हमें कोई सुनाई देता है और हम एकदम क्या बोलेंगे, ऐसे हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मूवमेंट होती, रिफ्लेक्स एक्शन तो पता है ना, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड, है ना। मोटर रिस्पॉन्स कैसा? इमीजिएट मोटर रिस्पॉन्स है टू द सेंसरी स्टिमुलस, टू द सेंसरी स्टिमुलस को जो मोटर रिस्पॉन्स दिया जाता है बॉडी के द्वारा। मोटर रिस्पॉन्स कौन देते हैं? या मसल्स या ग्लैंड्स। मोटर रिस्पॉन्स कैसा होता है? वो जो रिफ्लेक्स एक्शन में होता है वो होता है इनवॉलंट्री, है ना। इनवॉलंट्री होता है, फास्ट होता है, इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे हम। तो इन्फीरियर कॉलिकुलाई का फंक्शन है मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। इतना समझ में आया आपको? ये जो वेंट्रल पार्ट है दैट इज़ सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल पेडंकल को देखेंगे तो वहाँ पर हमें दो लॉन्जिट्यूडिनल नर्व्स के ट्रैक नज़र आते हैं। ये जो दो लॉन्जिट्यूडिनल नर्व्स के ट्रैक्स हैं उनमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स है, जो मिड ब्रेन को जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स जो है वो उसका काम क्या है? तो फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करना। मिड ब्रेन का जो सेरेब्रल पेडंकल है उसमें ये जो बैंड है जो डॉर्सल की तरफ है, डॉर्सल साइड की तरफ है, दैट इज़ टेगमन, वाइट मैटर से बना है वो। और ये दूसरा जो है ये है सेरेब्रल क्रूरा सेरेब्री या फिर क्रॉस सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री बोलते हैं हम इसे। समझ में आया ना बेटा? क्रूरा सेरेब्री। क्रूरा सेरेब्री में ग्रे मैटर होता है। क्या होता है इसमें? ग्रे मैटर होता है। जो टेगमेंटम है, टेगमेंटम में जो मासेस ऑफ ग्रे मैटर दैट इज सराउंडेड बाय वाइट मैटर आर कॉल्ड रेड न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे हम इसे? रेड न्यूक्लियस या फिर रेड न्यूक्लियाई। एंड फंक्शन है वो रेड क्यों है वो भी बताया मैंने आपको। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर आयरन कंटेनिंग होता है, इस सेल्स में आयरन है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई है, इसलिए कलर रेड दिखता है। एंड इसका फंक्शन है, ये जो रेड न्यूक्लियस है अलॉन्ग विथ सेरेबेलम, सेरेबेलम के साथ मिलके मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मस्कुलर मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। एनी डिफ़िकल्टी? और ये है, ये जो मोस्ट वेंट्रल बैंड है दैट इज़ क्रूरा सेरेब्री। फंक्शन क्या है मिड ब्रेन का? मिड ब्रेन का फंक्शन विजुअल रिफ्लेक्सेस, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, है ना। मिड ब्रेन कंसर्न है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ। और इसके साथ साथ मिड ब्रेन का फंक्शन है इट कनेक्ट फोर ब्रेन विथ हाइंड ब्रेन। एंड दिस इज आइटर। आइटर इज प्रेजेंट बिटवीन टेगमेंटम एंड टेक्टम, एंड आइटर कनेक्ट थर्ड वेंट्रिकल ऑफ मिड ब्रेन विथ फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ third ventricle of diencephalon with fourth ventricle of hind brain. Any difficulty? So in this way we have completed mid brain. So if you have any difficulty you can ask me your questions, your queries.